space physics as it's a new topic. So few of the things that you're not familiar with. सबसे पहले हमारे पास आता है what is axis. So we define axis as an imaginary line. I'll go through each and every small details that we have in space physics. So once and for all, you can consult it for the final exams as well. So axis is an imaginary line between poles. The second important point is K, the Earth is tilted at 23.5 degrees. That's why temperature is not uniform across the poles. Due to this reason, for example, tilt मैंने थोड़ा ज़्यादा ही शो कर दिया है. पहले हम उसकी straight line बना लेते हैं. कि if this is a straight line, ये हमारी अर्थ है. The earth is tilted at a 23.5 degrees, due to which certain areas, for example, if sun is on this side, so certain areas will get more heat than the rest. अब obviously, due to this tilt, यहाँ पे temperature क्या होगा? Greater as compared to this area. Let me draw the reference line with another color so that we could see the difference. This is the tilt that we have. Let me use a darker color. Okay. This was the tilt of 23.5 degrees. So this area, as it is further away from the sun, so it will be, the temperature would be less here as compared to this area. That is why uniformity of temperature across the उसमें हमारे पास जो है वो नहीं होती है. Also, we can say that countries that are at the equator do not experience seasons, because all throughout the year the sun it will be at the same point to them. That's why we experience nahi karenge. If we're talking about the seasons, we know that due to orbital motion of the Earth, we get day and night. Sorry. Orbital motion की वजह से we get seasons. And due to spin motion, we get, क्या मिलता है हमें? अहमद, सर आपने कहा है कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से सीजन्स होते हैं. नहीं, I was asking a question के if orbital motion की वजह से we are getting motion seasons, spin motion की वजह से हमें क्या मिलता है? You missed that part, हम उसको डिस्कस कर रहे थे. Anyhow, डे एंड नाइट. yeah, day and night. Then हमारे पास जो है we have the orbital motion of the moon. बल्कि नहीं, sorry, let's add to that.
the seasons due to the magnetic field of the earth, we get seasons. Or our seasons could be influenced by the magnetic field of the earth. So वो जो we have heard about the apparatuses and everything ना जो weather conditions को change कर सकते हैं and stuff like that, the modern technology, that's all dealing with the magnetic fields of the earth. So due to this, we get the seasons and everything that we have. It's not the main course, but yes, the seasons could be affected by the magnetic field of the earth. It's not because we already have studied that the orbital motion is responsible for that. Here, we also need to discuss what solar mass is, because when it comes to the space physics, solar mass, this term is very important. And the mass of the sun is known as the solar mass, which has a value of 0.2 into 10 to the power 30 kilograms. On the contrary, the Earth's mass is 6 into 10 to the power 24 kilograms, and radius of the Earth is considered to be. Again, we do not need to memorize all these things. It will be given in the question if asked in any context. Is 6,400 kilometer. That is the distance from center of the earth to the earth surface. Then comes the term that we experience a lot is which is the nearest uh, star to our earth. What is the name of the star? Hafsa, you remember it? Sun. Huh? नहीं Century. Proxima Proxima Centauri is the nearest. वो तो हमारा सोलर सिस्टम आ जाता है ना सन वाला. Is 4.2 years light years away from us. Light years पे भी हम लोग आएंगे. Light year एक another important topic है हमारे. उसका light year क्या होता है? समीर, This how do we define one light year? अब उसका साइलेंट मोड ऑन हो जाएगा. हाँ जी, अब्दुल रहमान. Distance traveled by light in 1 year. In 1 year. And उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? Speed is equals to distance over time होता है, and distance would be equals to speed into time. The speed of light is given as 3 into 10 raised to the power 8, and the time is given as, if we were considering the time of 1 year, so it would be 365 times 24 times 60 times 60, and the value come out to be, क्या होती है लाइट ईयर की वैल्यू? 9.4 essence power 15. And always remember, it's the distance that we use. मीटर्स में आ जाएगा हमारे पास. किलोमीटर्स में जाएंगे तो एक और वैल्यूज में जो है वो लेस हो जाएगी. देन कम्स, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था विद वन ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैलेक्सी. सो वो डिफाइन एज गैलेक्सी एज अ ग्रुप ऑफ स्टार pulled by the force of gravity. And also remember, whenever we're talking about the space physics, gravity is the ultimate force that is dealing with whole of the space physics. ठीक है? उसके अंदर आपने mix up नहीं करना है. If there comes any questions, this is the only thing that we're dealing with. And it leads to other things. Obviously, it leads to other things. Then comes the definition of Milky Way. How do we define Milky Way? Is a spiral galaxy of which
our solar system is a part of? So if someone asks you what is definition of, and last but not the least, definition of universe. यूनिवर्स को कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने? हफ्सा, are you guys able to listen to me properly? मेरी आवाज कट तो नहीं हो रही? नहीं नहीं सुनाई सही दे। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा आपसे? आप लिख जो रहे थे इसलिए। मैं तो जब जवाब नहीं आया तो लिखना शुरू किया मैंने. यूनिवर्स इज एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स ऑल स्पेस टाइम एंड एवरीथिंग. देन हमारे पास सीजन्स वगैरह आते हैं. सो फार हम लोगों ने एज इट इज एक्सपीरियंस नहीं किया कि सीजन्स का क्या सिनेरियो होता है हमारे पास, और एग्जाम्स में उन्होंने एज इट इज कभी पूछा भी नहीं कि कैसे सीजन्स हमारे पास मतलब इक्वेटर्स के ऊपर किस किस तरीके से सीजन आते हैं. सो दिस इज व्हाट वी डील विद के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वर्सेस साउदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर हमारे पास जो चल रहा होता है सिनेरियो, वो कुछ ऐसा है. सॉरी. यस. So far we have dealt with कि दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर विंटर्स होता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी समर्स होता है टू द साउदर्न हेमिस्फेयर, and in March we have autumn and spring in the respective hemispheres. June में winter and summers. And if the examiner would ask us what is the reason behind that, हम उसको क्या आंसर करेंगे? Why do we have different seasons at different poles of the earth? Earth is tilted. No. Tilt, देखो, let me repeat. Tilt is only concerned with the non-uniform temperature across the surface. ठीक है? It does not have to do with the seasons. The season is because if you could see in the diagram, it is because of the facing of the sun. जो sun को face कर रहा होगा वहां पे क्या होगा? Summers होगा. जो sun से away होगा वहां पे क्या होगा? हमारे पास winter होगा. Clearly. अब जहां पे समर चल रहा है वहां पे हमने डिस्कस किया था कि 23.5 डिग्रीज के टिल्ट की वजह से विल हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन अक्रॉस द अर्थ. एंड हमारे सोलर सिस्टम का मेन पार्ट कौन है? सन इज द सन इज स्टार. सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं. सन इज द मेन स्टार. दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज द स्टार, इज द मेन स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम and everything revolves around it. And इसमें एक जब हम स्पेस फिजिक्स की बात करते हैं, मोर मैसिव the object is, greater will be its gravitational pull. So as sun is the most massive star in our solar system, so everything is revolving around us due to gravitational pull, due to its gravitational pull. Everything that is revolving around anything is basically due to the gravitational pull. जिसका mass ज्यादा होगा उसकी gravity ज्यादा होगी, it will influence the other star. Like हमारे solar system में moon is revolving around us. This means कि Earth's gravitational field is pulling the moon towards it. और जिसकी वजह से हम लोगों ने tides वगैरह and everything पढ़ा भी था. Then comes the important part where we discuss about the solar system. उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? Mercury, Venus, Earth,
मार्स, जुपिटर, सॉरी जुपिटर की स्पेलिंग गलत हो गई, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इनमें रॉकी प्लैनेट्स सैटर्न कौन से होंगे? सैटर्न 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 नहीं लिखा। सॉरी सैटर्न, जुपिटर, जुपिटर के बाद हाँ जी। अब इसमें से रॉकी प्लैनेट्स कौन से होंगे? फर्स्ट फोर। यस। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हफ्सा? रॉकी एंड स्मॉल। फर्स्ट रीजन क्या है हमारे पास? दे आर क्लोजर टू सन। एंड सेकेंड रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग gravitational pull of the sun, they are more dense and have rocky cores. Out of all these four planets, which one is the habitable planet? मार्स। Yes, वहीं से आए थे ना आप, उन्होंने निकाल दिया था आपको बाहर, क्योंकि इंसान तो नहीं मार्स पे अभी तक रह सकता। तो वहां पे क्या हालात थे, मतलब जब आप वहां पे से, आपको जब वहां से निकाला गया था, तो उससे पहले पहले तो क्या सिचुएशन थी वहां पे? सर खुशहाल थे वो पानी लोग? की पानी की पानी कमी की हो गई थी कमी थी। इसलिए हम आ गए थे। हाँ जी, तो इसलिए आ अच्छा, गए। सही। तो अब वहां पे वापस दोबारा ठीक हुआ पानी की नहीं? नहीं, अभी अर्थ में हम जमा कर रहे हैं, अर्थ से लेके जाएंगे वहाँ। हफ्सा को भी साथ ही ले दो ना, ये भी गैर इंसानी मखलूक ही है हमारे पास यहाँ। एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, आई वाज जस्ट कनेक्टिंग माय चार्जर, सो आई वाज जस्ट किलिंग द टाइम। In between Mars and Jupiter, we get an asteroid belt. एंड वी नो दैट कि एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारे पास जुपिटर के अराउंड और सैटर्न के अराउंड उसके बाद एग्जिस्ट करती भी है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है हमारे पास, और इनमें हमारे पास माइनर प्लैनेट्स भी आ जाते हैं। Why do we call it minor planet? Because they are orbiting the sun as well. देन कम जुपिटर टू सैटर्न हमारे पास क्या होता है? दे आर गैशियस प्लैनेट, एंड इनको क्या कहा जाता है? गैस जाइंट्स भी कहा जाता है। These four planets are known as gas giants and are big in size. And it's mostly constitute of gases because gravitational pull of the sun is weaker here. Big in size, and least dense. That is why they are known as gas giants. Then, is Pluto the part of our solar system? यस। Is it? नो नो नो। Pluto, although considered as a minor planet, और इनको dwarf planets भी कह सकते हैं, and no longer the part of solar system.
देन मेट्रॉइड एंड एस्ट्रॉइड्स होते हैं हमारे पास. They are basically the lump of rocks that orbit around us. कॉमेट्स हमारे पास क्या होते हैं? कॉमेट्स आर बॉल ऑफ आइस, डस्ट एंड गैस. एंड उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? दे हैव अ ट्रेल. जिसको क्या नाम दिया जाता था? उस ट्रेल को क्या नाम दिया जाता था? Which orbits the sun and leaves a trail due to the heating of sun. When it comes closer to sun, तो उसकी हीट की वजह से it leaves a trail behind it, जैसे हम aeroplanes के behind देखते हैं. And comets have the most elliptical path. And we know that our planets revolve in an elliptical path. That is why we take average values of time and distances. एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस हम किस लिए लेते हैं? क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं है बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं हमारे पास. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द पाथ्स, तो ऑर्बिटल पीरियड एंड स्पीड इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला होता है? 2πr/t. ठीक हो गया? ये एवरेज ऑर्बिटल रेडियसेस होते हैं हमारे पास एंड उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज होती हैं. अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स और ऐड होते हैं. फर्दर अवे द प्लैनेट इज. क्या इसमें 2 पॉइंट्स ऐड होंगे? हु वुड टेल? जितना प्लैनेट फर्दर अवे होता है, व्हाट पॉइंट्स डू वी हैव? रेडियस भी ज्यादा होता है, फर्स्ट टाइम भी ज्यादा होता फर्स्ट इज टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर रिडक्शन आती है उसके अंदर एंड ऑर्बिटल पीरियड उसका इंक्रीज हो जाता है. That is, further away from the sun, greater it would take time to travel or complete its orbit than the ones which are closer to the sun. So, greater the distance from the sun, lesser would be its temperature, and हमारे पास जो है reduction in temperature आएगा, and हमारे पास जो orbital period है that would increase, and by orbital period we means it would take longer time to complete its orbit. Are you clear up till here? Yes. और मेट्रॉइड्स क्या होते हैं हमारे पास? lumps of वो gases वगैरह जो होते हैं इसमें. हाँ जी.
tiny grains of material which burns up when entering the atmosphere. Atmosphere में enter होके why do they burns up? What comes to your mind? Because Why do they friction burn will up? lead to Yes, due to the friction of the atmosphere. Because our atmosphere has air and other particles present in the atmosphere. So as soon as they enter the atmosphere, तो हमारे पास वो आ जाता है. Now comes the actual, I wouldn't say the actual topic, but the formation of the star. How does the formation of the star starts from? It always starts from nubella. Nubella. How do how do we define nubella? Nubella कब form होता है हमारे पास? When does the nubella star forms? It is due to the death of some other star. किसी और star की death पे we get a nubella. And how do we define nubella? It's a swirling ball of dust and gases and planets are formed due to the gravitational pull of this. क्योंकि planets को form करने के लिए जो dust and gases and rocky materials required होते हैं, that has been spread into space by the death of some other star which we called nubella. And किसी और star की formation में nubella is the first and foremost important thing. ठीक है? Now comes how a star is formed. क्या point होता है? How a star is formed. Due to the पहला point क्या है? Gravitational pull dust and I'm writing it down just because so that you could have the vocabulary to write the answers when it comes to exams. Due to gravitational pull, dust and gases are clumped together into a disk called, what is that disk called? Accretion disk. Accretion disk, basically. If I'm wrong with the vocabulary, just ignore it, but the spelling accretion disk hoti hai. And this leads to the formation of innermost core of the planet, which is actually rocky. So when gravitational pull acts on the dust and gases which are present in the space and they are clumped together and forms an aggregation disk, which is basically the center of the planet, which is mostly rocky. And इसके बाद क्या होता है हमारे पास? What happens next? प्रोटोस्टार आता है हमारे पास. अब न्यूबेला से हमने स्टार्ट किया, वी जो है हमारे पास फिर एग्रीगेशन डिस्क आया हमारे पास. उसके बाद हमारे पास जो है अब हम प्रोटोस्टार के ऊपर आ रहे हैं. प्रोटोस्टार के बाद हमारे पास क्या है? प्रोटोस्टार बेसिकली क्या होता है? इज द फर्स्ट स्टेप. स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरस्टेलर क्लाउड, ये जो न्यूबेला डस्ट एंड गैसेस हमने डिस्कस किया इनको इंटरस्टेलर क्लाउड भी कहते हैं हम लोग. इंटरस्टेलर क्यों कहते हैं? बिकॉज स्पेशल फिनोमेना होता है.
starting from interstellar cloud containing mainly कौन सा फील होता है? Hydrogen is the main fuel of everything, जिसको molecular clouds भी कहते हैं. इंटरस्टेलर क्लाउड्स में हमारे पास डस्ट एंड गैसेस आएंगे, एंड मोलिकुलर क्लाउड के अंदर हमारे पास मेनली क्या होता है? हाइड्रोजन होता है. एंड दिस मोलिकुलर क्लाउड इज dense and cold. So now gravity pulls them inward, and due to friction between the particles, क्या होता है हमारे पास? This gravitational, this GP converts to the thermal energy, and the super hot जो हमारे पास gases का जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज बेसिकली द प्रोटोस्टार. अभी हमारे पास फियन रिएक्शन इनिशिएट नहीं हुआ है. वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू द रेडिएशन प्रेशर वाला सेक्शन. ठीक है. सो when the gravity pulls everything inward, the dust and gases and the hydrogen, due to the friction between these particles, because they're being pulled inward, due to that friction, the temperature of the core started to rise, and that very hot central core is known as the protostar. So after this thermal energy is converted into क्या होता है वो? सॉरी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं. When this thermal energy keeps rising until anyhow, when this thermal energy keeps rising and is enough for fusion reaction to initiate, then हमारे पास क्या create होता है? Radiation pressure, which acts in the outward direction. So when inward gravitational pull equals outward radiation pressure, a stable star is formed. तो हम अगर एक क्विक सा रिव्यू करें, हमारे पास सबसे पहले क्या आया? न्यूबेला. उसके बाद क्या आया? प्रोटोस्टार. प्रोटोस्टार के अंदर हमारे पास कौन सी चीजें आती हैं? मोलिक्यूलर एंड इंटरस्टेलर क्लाउड. प्रोटोस्टार के बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हुआ? प्रोटोस्टार के बाद हमारे पास क्या आया था? फ्यूजन रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास इनवर्ड एंड आउटवर्ड प्रेशर जो है वो इक्वल हुआ, and that leads to a stable star. अब what is main sequence? Stable star के बाद हमारे पास main sequence आता है, and main sequence is defined as when
12% of the fuel has been utilized. And I revise again. फ्यूल हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन. एंड उसका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? हीलियम. Cause the energy, the temperature, the pressure, and the thermal energy. The pressure and the thermal energy in the star is enough to fuse two hydrogen atoms to form an helium atom. बाद में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि when it comes to the death of a star, apart from that, ये तो और भी चीजें हैं which becomes a part of the planet. But anyhow, फॉर नाउ अप टिल मेन सीक्वेंस हमारे पास जो है स्टार्स की फॉर्मेशन आ जाती है. व्हेन वी रीचेस टू मेन सीक्वेंस पार्ट, यहां से हमारे पास स्टार्ट होता है डेथ ऑफ अ स्टार. ऑब्वियसली फ्यूल इज बीइंग यूज्ड, तो फिर हमारे पास डेथ ऑफ अ स्टार का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है. डेथ ऑफ अ स्टार के अंदर हमारे पास टू पोर्शन आते हैं. मेन सीक्वेंस तो भाई कॉमन है, मैंने बहुत दफा बताया है कि मेन सीक्वेंस कॉमन है. इसके बाद हमारे पास आता है कि हमने उसको डिवाइड करना है कि इफ द फ्यूल लेफ्ट इन द स्टार इज लेस देन 8 सोलर masses, एंड सोलर masses हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हुए हैं, 8 solar masses, and or if the mass left is more than 8 solar masses. More than 8 solar masses. अब दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आएगा? रेड जायंट. और इसमें क्या आएगा? सुपर रेड जायंट. मेन सीक्वेंस के राइट आफ्टर हमारे पास क्या आएगा कि इफ इट्स लेस देन 8 सोलर masses, we'll get a right giant, a red giant. And if it's more than 8 solar masses, the fuel left in the star is, then it would be a super red giant. After that हमारे पास क्या आता है? Planetary nebula, and then white dwarf, and लास्ट में क्या आता है? ब्लैक dwarf. That's when it's less than 8 solar masses. This is the ultimate end of the star. But when it's super red giant and 8 then more than 8 solar masses आता है, तो हमारे पास क्या क्रिएट होता है? सुपरनोवा. अब सुपरनोवा को फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि सुपरनोवा तक रीच आउट होने पे इफ द सोलर masses इज द सोलर मास लेफ्ट इज, क्या होता है इसके अंदर? हम लोग क्या किस चीज को माइंड में रखते हैं? अगर हमारे पास लेस देन 3 सोलर masses होगा, सोलर मास को मैं एसएम से लिख रहा हूं. इफ इट्स लेस देन 3 सोलर मास, तो हमारे पास क्या क्रिएट होगा? न्यूट्रॉन स्टार. और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 3 सोलर मास होगा, सो विल गेट ब्लैक होल. अब इनके जो रिस्पेक्टिव कलर्स हैं जो हमने उनको नाम दिए, दैट हैज अ सिग्निफिकेंस इन आवर थ्योरी, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हमारे पास क्या होता है. रेड जायंट को रेड जायंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका, व्हाई डू वी कॉल रेड जायंट अ रेड जायंट? कलर रेड होता है. हाँ जी. और क्यों होता है? ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर. उसकी सरफेस टेम्परेचर जो होता है हमारे पास क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज से हमारे पास जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है. दैट्स वेरी ऑब्वियस कि इफ द टेम्परेचर वुड रिड्यूस, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड जो है अदरवाइज जो है वो हमारे पास एक्सपेंशन होगा. बट इसमें और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, व्हेन इट कम्स टू स्पेस फिजिक्स, हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ड्यू टू द इंक्रीज इन डेंसिटी हमारे पास जो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? हाइप्ड हो जाते हैं. तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा,
हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज होगा, दैट वुड लीड्स टू मोर फ्रिक्शनल इफेक्ट्स व्हिच वुड इन टर्न इंक्रीज द थर्मल टेम्परेचर। यही वो रीजन है कि जब हमारे पास डेथ ऑफ अ स्टार हो रहा होता है, इवेंचुअली फ्यूल जो है हमारे पास यूज अप हो रहा होता है, व्हेन फ्यूल यूज्ड अप, टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है। अभी बड़े मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि फ्यूल हमारे पास यूज्ड अप हुआ, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज्ड, दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सो अगेन फॉर द लास्ट टाइम वट एवर इज लेफ्ट ऑफ द फ्यूल, वट एवर लेफ्ट ऑफ द फ्यूल, वो क्या करेगा, हमारे पास फाइनल ब्लास्ट होगा, and this final blast would have enough energy to create elements of mass greater than iron. Fe जो हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ। अब हम लोग बात कर रहे थे रेड जाइंट्स की कलर, रेड को रेड क्यों कहते हैं। सो रेड जाइंट इज बिगर एंड विद अ कूलर सरफेस, और हमें पता है कि रेड की वेवलेंथ क्या होती है, इट्स बिगर बिगर वेवलेंथ होती है एज कम्पेयर टू द ब्लू कलर और एनीथिंग लाइक दैट। सो हमारे पास जब इवेंचुअली द स्टार इज डाइंग, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है, उसकी टेम्परेचर जो उसके जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो कूलर होता है, दैट इज वाई जो है वो इट अपीयर्स लाइक के वो रेड कलर हमारे पास रेड वेवलेंथ में हमारे पास शो हो रहा होता है। देन जो है रेड जाइंट इट collapses into a white dwarf and then eventually to a black सर एक dwarf. सवाल था। हम्म। वो वो कौन सा पार्ट होता है लाइफ साइकिल में स्टार की जिसमें हैवी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं? यही तो मैंने अभी आपको बताया, सुपरनोवा। मैंने ये मतलब आई ओके। डिडंट टुक द नेम ऑफ सुपरनोवा, मैंने एज अ सुपरनोवा का नाम नहीं लिया, बट इवेंचुअली वो, क्योंकि हमारे पास 8 सोलर मैसेस, सॉरी 3 सोलर मैसेस से ज्यादा उसमें आ रहे हैं ना, तो हमारे पास दैट इज द पॉइंट। और उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार को न्यूट्रॉन स्टार भी क्यों कहते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एनफ टू फ्यूज अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन। हमने न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन पढ़ी भी थी, और न्यूट्रॉन का ब्रेकेज भी पढ़ा हुआ है अपने बीटा पार्टिकल के अंदर की, बीटा पार्टिकल की एक्सपेंशन कैसे होती है, एक्सपल्शन सॉरी कैसे होती है हमारे पास। I'll share the notes with you as guys, but it's good we'll write it here that ये जो greater than iron होता है, that is when supernova explodes. It would leads to elements creating the mass greater than that of iron. बाकी कलर्स हो गए, सुपरनोवा की masses dependency हो गई, ब्लैक होल में हमें पता है कि why it's called a black hole, because it's pure gravity, where there is gravity वहां से कोई एक्सपल्शन पॉसिबल नहीं होती, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट। और हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार को न्यूट्रॉन स्टार क्यों कहते हैं, बिकॉज द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन देयर हमारे पास जो है। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्बिटल मोशन तो डिस्कस कर लिया मैंने कि हमारा ऑर्बिटल मोशन जो है वो एलिप्टिकल है, इट्स नॉट ऑर्बिटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो हमने उसका मोशन डिस्कस कर लिया है। हाँ, एलिप्टिकल होता है जिसकी वजह से हम तमाम वैल्यूज जो हैं वो लेते हैं, एवरेज वैल्यूज लेते हैं। एंड ऑल्सो ड्यू टू दिस एलिप्टिकल पाथ हमारे पास सन इज द सन इज एट द फोकस ऑफ द एलिप्स। जैसे सर्कल का सेंटर होता है ना, इस तरह एलिप्स का क्या होता है, फोकस होता है हमारे पास। फिर जब हम सर्कुलर मोशंस की बात करते हैं, डेथ ऑफ द स्टार एंड मेकिंग के बारे में के बाद हमारे पास मोशन आ जाता है, मोशन ऑफ अ प्लैनेट। सो यहाँ पे हमने दो एनर्जीज पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन क्लोजर टू द सन,
क्लोजर टू प्लैनेट काइनेटिक एनर्जी होती है, फर्दर अवे फ्रॉम प्लैनेट हमारे पास जीपी होती है, एंड दिस कीप्स ऑन कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज सन, ये हमारे पास ऑर्बिट है, ये प्लैनेट ए है, दिस इज प्लैनेट बी। सो प्लैनेट बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बिगर देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड प्लैनेट ए के लिए जीपीई वुड बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ वी बी वुड बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वी ए बिकॉज इट्स फर्दर अवे फ्रॉम दैट। लेट्स जस्ट, मैंने बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हुए हैं कि कंसिडर इट कि आपने एक प्लैनेट को अटैच किया विद एन इलास्टिक स्प्रिंग, और आप जब इस इलास्टिक स्प्रिंग को रिवॉल्व करते हो तो फर्दर इट गेट्स अवे उतनी ही फास्टर स्पीड से जो है वो वापस आता है हमारे पास। Then comes the very last topic of our space physics, which is, what is the last part of our physics? Hafsa. What is the last part of space physics? हबल कांस्टेंट वाले से Yes, which is, we deal it with the Doppler's effect. Doppler's effect तो क्या बताता है, when there is a relative motion between observer and source, there is an apparent change in frequency of the source। यहाँ पे फिर हम एक टर्म पढ़ते हैं which is known as, what is that term known as? Red shift and blue shift। Red shift is when the planets are receding, and blue shift is when the planets की बजाय हम objects भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि it's not in particular with the planets only when the objects are approaching। apparent, अब अप्रोचिंग एंड रिसीडिंग में हमें पता कैसे चल रहा है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन wavelength of the received signal, एंड यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ड्यू टू डिक्रीज in wavelength। For example, if this is the radar, हम लोगों ने यहाँ से कोई सिग्नल भेजा and that object was traveling away from us, so the signal obviously would, जो अब रिसीव होगा हमें, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बिगर होगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वही हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट जो है वो अप्रोच कर रहा होगा, एंड ये रिसीडिंग की फॉर्म में है, सॉरी एक्सक्यूज द स्पेलिंग, जब ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा होगा तो जो इनकमिंग वेवलेंथ आएगी हमारे पास, इट वुड बी शॉर्टन इन वेवलेंथ। ऐसे ही एक स्प्रिंग है, एक ऑब्जेक्ट के साथ आपने स्प्रिंग अटैच कर दिया,
तो वो जितना फर्दर अवे जाएगा वो स्प्रिंग उतना ही क्या करेगा, वो एक्सटेंड होगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वो हमें अप्रोच कर रहा होगा तो वो स्प्रिंग उतना ही क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो दिस इज नोन एज द रेड शिफ्ट। सो अगर हमारे पास रेड शिफ्ट इज बिगर, our wavelength is getting bigger, this means that objects are going away from us. So this tells us that the universe is expanding continuously. And due to the this expansion everything is going away from us. उसके लिए साइंटिस्ट ने हम लोगों को एक बड़ा अच्छा सा एक वर्क प्लान दिया कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेंशन, ऐसे आप कंसिडर करो कि आपका देयर इज अ बलून एंड आप उस बलून के अंदर एयर फिल करी जा रहे हो। ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इट स्टार्ट्स टू एक्सपेंड। एंड जैसे जैसे अब अगर पहले हमारे पास पॉइंट ए बी एंड सी यहाँ पे थे, ड्यू टू एक्सपेंशन अब वो पॉइंट ए बी एंड सी यहाँ पे चले जाएंगे, फिर मजीद एक्सपेंड होगा, ए बी एंड सी ऐसे आ जाएंगे। दैट्स हाउ यूनिवर्स इज वर्किंग राइट नाउ, कि as the time is passing the universe is continuously expanding, just like a balloon is being filled up with air, and that's the expansion model हमारे पास वो करता है। So redshift is basically, तो अगर हम define करें तो हम redshift को कैसे define करते हैं, redshift is an increase in observed wavelength. Sorry, I need to clear the in observed wavelength. नहीं यार, अच्छा बाद में कर लेता हूँ, of electromagnetic radiations. बस स्पेलिंग ठीक कर लें, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इससे अच्छा हम जिस तरह लिख लेते हैं। अच्छा जी, डॉपलर्स का हमने डेफिनेशन डिस्कस कर लिया। डॉपलर्स इज बेसिकली द डेफिनेशन व्हिच टेल्स अस रिपीटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास हबल्स लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। हबल्स लॉ हमें क्या बताता है, व्हाट इज हबल्स लॉ? It tells us the speed at which the galaxies are moving away from us. It tells us that the speed is proportional to the distance, and from there we get a constant which is known as Hubble's constant. And H naught is equals to V over D. Hubble's has a constant value of, इसका यूनिट क्या बनेगा हमारे पास, per second, and it has a constant value of 2.2 into 10 raised to power minus 18 per second. The derivation for the constant value is not something that the part of the syllabus, but if we draw a graph between speed and distance traveled, so it is the basically line of best fit का gradient है ये।
gradient is Hubble's law. Since we are on this graph, v orbital and distance traveled, यहाँ पे हम उस scatter graph को भी discuss कर लेते हैं. Scatter graph हम किस लिए use करते हैं? Who would tell what scatter graph is used for? Scatter graph is used to find a relationship between two quantities. If we want to find a relationship between two quantities, we take help from scatter graph. Hubble's law could also be used to find out the age of the universe. For that, we need to rewrite this formula as h naught is equals to v over d. We also know that speed is equals to distance over time and time is equals to distance over speed. So if we reciprocate this formula as 1 over h naught, it would be equals to d over v, which would be equals to the t value. So this is age of the universe. So t is equals to 1 over h naught. So when the value is put into here, which is 2.2 into 10 raised to power 18 minus 18, we get the age of the universe. By putting the value into this equation, we get the value as 4.5 into 10 raised to power 7 seconds, और into अगर हम years करें तो 4.4 into 10 raised to power 7 years आ जाएंगे हमारे पास. Can you check the answers for that? इसको divide 4.5 into 10 raised to power 7 को divide करें उससे 365 से. I guess 8 years बनेगा. And this is 14.5 billion years old है हमारी universe. ठीक हो गया? And यहाँ पे एक और important point भी हम discuss कर लेते हैं कि when it comes to Hubble's law, greater the distance, greater the receding speed of the planet. यानी जितना further away हमारा planet होगा उतनी ही ज्यादा उसकी receding speed होगी, which we have used or found using this relation that v is proportional to d, which was the basis of the Hubble's law. And the very last topic, which you guys mostly make mistakes in, this is the last time I'm writing everything down, and that is cosmic microwave background radiation. जिसको हम CMBRB कहते हैं. So cosmic microwave background radiation was जो था, it was found out that there's some noise in the space and the radio telescope picked that noise, and when it was studied, it fall into a microwave radiation. So when the scientists worked on that, so they found out that these microwave background radiation is due to the Big Bang happened millions of years ago, and the waves has redshifted to microwave
Obviously, millions of years ago ki traveling ke baad, they have redshifted into a microwave region. That these microwave radiation is a proof by the scientists that some kind of a big bang had occurred some millions of years ago, whose radiation has shifted into a microwave region, redshifted into a microwave region. And this CMBR tells 2 points: that universe is expanding and there was some kind of a big bang which occurred into millions of years ago, which has eventually redshifted into a microwave region. So that's all regarding space physics and everything. Hope we'll get time to solve the questions as well. That's it for